You are welcome. Part of annual CHSE examination 2021. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज आम आउ गोटे पार्ट को देखा क्वेश्चन थिला बाकी रही जाइतिला आमर लाइफ स्पान डेवलपमेंट रो. Okay, so I will try to explain very clearly so that you may understand properly and you may write in the examination. Okay, so lifespan development ro part 2 रे जो किछि क्वेश्चन रही जाइतिला शॉर्ट क्वेश्चन वर्तमान हम ताको डिस्कस करिवा. Okay, so let's start. Okay, short question 2 and 3 marks annual CHSE examination 2021 and 22 and topic is of lifespan development part 2. Okay, so क्वेश्चन नंबर 16 जोटा कि 15 नंबर क्वेश्चन आम ऑलरेडी डिस्कस कर सारी. ओके, बर्तमान आम 16 नंबर क्वेश्चन आरंभ करवा. तो क्वेश्चन टा हूँ राइट द फंक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड. ओके, क्वेश्चन टा बुझीगला. अम्बिलिकल कॉर्ड रो फंक्शन टा कौन ताकू लेख बोलिक क्वेश्चन टा आसला. सो हाउ एंड व्हाट वी शुड बी रिटन देयर. तो आंसर आम या लिखिदे पारिबा द अम्बिलिकल कॉर्ड इज ए रोप लाइक स्ट्रक्चर. जदि तार स्ट्रक्चर टाको आम देखिबा, ओके, स्ट्रक्चर देन वी कैन से दैट इट इज ए रोप. ये जो स्ट्रक्चर टा आम देखुचु ये जगह रे, ओके, इट इज विथ द बेबी एंड दिस इज कॉल्ड द अम्बिलिकल कॉर्ड. ओके, दिस इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड एंड एटा होची गोटे रोप लाइक स्ट्रक्चर. ओके, तो एक नंबर आम कौन बुझिले इन द फर्स्ट लाइन इन फर्स्ट पॉइंट वी अंडरस्टूड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज ए रोप लाइक स्ट्रक्चर. बुझीगला. ये अम्बिलिकल कॉर्डटा गोटे रोप लाइक स्ट्रक्चर आम देखिपर. ओके, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी द लाइफलाइन ऑफ द एम्ब्रियो. ये जो अम्बिलिकल कॉर्डटा आम देखुचंती, तो ये अम्बिलिकल कॉर्डटा कौन ना यहाँ को लाइफलाइन बोलिक कह जाए. सेकेंड नंबर पॉइंट आम कहीदे पारिबा जेहेतु यहाँ प्रीनेटाल डेवलपमेंट रे डेवलप होता है बा ग्रो होता है, तेणुक आम कौन कहीदे पारिबा ना ये जो रोप लाइक स्ट्रक्चर जोटा कि आम अम्बिलिकल कॉर्ड कहूँ, इट इज द लाइफलाइन ऑफ द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो रो को लाइफलाइन बोलिक आम कहीपर. ओके, दिस इज सेकेंड थिंग. एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द एम्ब्रियो एट द वन एंड. तो ये देख पिला माने जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर. सी कहूँ अम्बिलिकल कॉर्डटा एक्सटेंड हो आरंभ हो कौटी वन एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो. ये जगार आरंभ है. दिस इज वन एंड. यहीटा जदि आमर अम्बिलिकल कॉर्ड हुए यार दीटा एंड अच्छी, ये गोटे आउ दिस वन गोटे दीटा. तो सी कहूँ गोटे एंड एठी अच्छी जोटा कि आम एम्ब्रियो बोलिक कहूँ सिंपली. नाउ इट इज द बेबी. ओके, तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज रे एठू गोटे एंड एगारे थाए. ओके, मीन्स इट इज कनेक्टेड विथ द कौटी दिस इज एब्डोमेन. गोटे एब्डोमेन बा गोटे एंडटा एम्ब्रियोर देहरे लागिकी अच्छी बा तार एब्डोमेन रे लागिकी अच्छी. एवं आउ गोटे हूँ कौन एट द एनादर एंड कनेक्टेड विथ द यूटेरिन वाल. एट द अदर एंड इट इज कनेक्टेड विथ द प्लासेंटा. तो यहीटा हूँ कौन, यहीटा हूँ दिस इज नोन आज प्लासेंटा. ये जो सॉलिड लाइक मास्क को आम देखिपारुच जोटा कि अम्बिलिकल कॉर्ड सांगे एटेच होकरी अच्छी, यहीटा हूँ कौन ना इट इज कनेक्टेड विथ द अम्बिलिकल कॉर्ड. दिस इज नोन आज प्लासेंटा. यहाँ को आम प्लासेंटा बोलिक कहले. ये प्लासेंटा सहित अम्बिलिकल कॉर्ड गोटे एंड रे कहा पाखे ना दिस इज कनेक्टेड विथ द एम्ब्रियो. यहाँ हूँ गोटे एंड एम्ब्रियो सांगे कनेक्टेड होकरी अच्छी, आउ गोटे एंड क्या सांगे कनेक्टेड होकरी अच्छी प्लासेंटा सहित कनेक्टेड होकरी अच्छी. ओके, एंड अगेन वन थिंग रिमेंबर दैट ये जो प्लासेंटाटा, ओके, प्लासेंटाटा कौटी कनेक्टेड होकरी अच्छी, इट इज कनेक्टेड विथ द यूटेरिन वाल जोटा कि आम यूटेरस बोलिक कहूँ. गोटे मदर रो यूटेरस रो जो भाषय अच्छी जस्ट एग्जांपल लाइक दैट ये भाया से गोटे वाल रे अटैच होकरी अच्छी. क्लियर बुझीगला. तो गोटे एंड रहा कनेक्ट होकरी कौटी एम्ब्रियो सहित
आउ गोटे अटैच होकर रहा क्या सांगे अदर एंडटा दिस इज नोन आज योर प्लासेंटा एवं ये प्लासेंटाटा क्या सांगे कनेक्ट होकर अच्छी इट इज कनेक्टेड विथ द यूटेरस ऑफ द मदर ओके द प्लासेंटा अटैच विथ द यूटेरिन वॉल और यूटेरस ऑफ द मदर ये जिनटा आम कहले बुझीगला ए सिंपली गोटे एंड कनेक्ट होकर अच्छी एम्ब्रियो सांगे आउ गोटे एंड कनेक्ट होकर अच्छी क्या सांगे प्लासेंटा सांगे एवं प्लासेंटाटा अटैच होकर अच्छी क्या सांगे ना द प्लासेंटा अटैच विथ द यूटेरिन वॉल और द यूटेरस ऑफ द मदर ओके then just look at here what is the function two arteries carry weights and carbon dioxide from the embryo to the placenta okay एठी पिला माने दुईटा आर्टरीज अछि just look at here okay ए जो आमे देखु जो अम्बिलिकल कॉर्ड अछि एठे अम्बिलिकल कॉर्ड रे दुईटा आर्टरीज अछि just look at here एठी ब्लू दुईटा अछि okay these are two blue colors are there okay just one minute ओके ये पिला माने आमे देखि परिवा हियर कैन लुक ओके एठी गोटे रेड कलर अछि एंड दुईटी ब्लू कलर अच्छी तो ये सी कहूँ दुईटा आर्टरीज अच्छी ओके आ गोटे हूँ भेन अच्छी अम्बिलिकल भेन ताको कह जाए आईटा को दीटा को आर्टरीज बोलिक कह जाए तो ये ब्लू कलर आर्टरीज रो काम कौन सी कहूँ ना टू आर्टरीज कैरी वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दीटा कौन करती ना कार्बन डाइऑक्साइड एवं वेस्ट से जो इनफांट बा जोटा को आम एम्ब्रियो बोलिक कहूँ दिस इज द एम्ब्रियो तो ये एम्ब्रियो रो जतिक जाक वेस्ट से आर्टरीज माने कोठी नहीं जाती this is called what this is known as your placenta तो एठू बेबी पाखरु दीटा आर्टरीज रे कार्बन डाइऑक्साइड आउ वेस्ट पार्टिकल्स जो गुड़ाक से गुड़ाक नहीं जाती ओके दीज आर टू आर्टरीज एंड आउ गोटे जोटा अच्छी से अम्बिलिकल भेन बोलिक कहूँ एंड तार फंक्शन हूँ एटा सी कहूँ कौन ना द अम्बिलिकल भेन डेलीवर्स ऑक्सीजन number 1 number 2 nutrients and hormones to the baby from the mother for survival of the what survive of the infant or you may tell about this is known as embryo तो ये जो रेड कलर आम देखिपुँ जोटा कि आम अम्बिलिकल भेन बोलिक कहूँ यार फंक्शनटा हूँ सिंपली ये कौन करे ना मदर पाखरु से छुआ पाखकू बा इनफांट बा व्हाट यू टेल अबाउट द एम्ब्रियो पाखक कौन करे ना इट ट्रांसमिट ओके और सेंड और डेलीवर कौन डेलीवर करुच्ची बा कौन सेंड करुच्ची इट डेलीवर्स द ऑक्सीजन बचापी ऑक्सीजन निहाती दरकार न्यूट्रिशन निहाती दरकार आउ हार्मोन दरकार फॉर ग्रोथ ओके यही तीनटा जिनिस बुझीगला अम्बिलिकल भेन कौन करे ना मदर पाखरु बेबी को ट्रांसमिट करे ओके दिस इज द फंक्शन ऑफ द अम्बिलिकल भेन ओके सो दुईटा तीनटा जिन आम ये जानिले जे अम्बिलिकल भेन कौन करुच्ची ना आमर नंबर 1 रे होची ऑक्सीजन डेलीवर करुच्ची फ्रॉम द मदर टू व्हाट मदर टू दिस इज एम्ब्रियो ओके मदर टू एम्ब्रियो पाख गला कौन ऑक्सीजन नंबर 2 रे गला न्यूट्रिशन आउ थर्ड नंबर है हार्मोन ये तीनटा जिन सी कौन करे डेलीवर करे फ्रॉम द मदर टू बेबी ओके this is the main function of the umbilical cord okay then 17 okay 17 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ एक्सप्लेन द पीरियड ऑफ इन्फांसी पीरियड टाको एक्सप्लेन कर जोटा कि आम क्वेश्चन जब पढ़ला प्रीनेटाल डेवलपमेंट तो प्रीनेटाल डेवलपमेंट भी आमको लिखापी पड़ो तो ता पूर्व किसी आम जानी नहीं ओके फॉर शॉर्ट क्वेश्चन इन्फांसी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द पोस्टनेटाल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग सिंपल हिसाब से आम जाचु जे पोस्टनेटाल पहला स्टेज कौन ना दिस इज नोन आज इन्फांसी स्टेज ओके दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द पोस्टनेटाल डेवलपमेंट एंड ये नंबर 1 देन नंबर 2 है दिस पीरियड स्टार्ट जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी फ्रॉम द मदर 2 नंबर आम कहीदे पारा ये स्टेजटा छुआटा डेलीवरी माँ पाखु मार है 2 नंबर स्टेजटा स्टार्ट 1 नंबर स्टेजटा स्टार्ट हो दिस इज पॉइंट नंबर 2 and number 3 in this stage the infant tastes the light sound air and atmosphere of the external environment without understanding its nature and meaning तो 3 नंबर पॉइंट रे लिखि दे परिबा एठी
जे एई स्टेज रे कौन होउची ना इन्फांट जन्म हो सारिबा परे ओके एक्सटर्नाल एनवायरनमेंट रु लाइट साउंड एवं एटमोस्फियर जी आमर जिनस रोचे सी एक्सपीरियंस करुच्ची अंडरस्टैंड एक्सपीरियंस करुच्ची बट सी कौन बुझीपार तार नेचर आउ मीनिंग कहार एक्सटर्नाल एनवायरनमेंट जो लाइट आसा कौन साउंड कौन यार कौन से किसी न जाणिक भी से एक्सपीरियंस करुच्ची दिस इज नंबर 3 पॉइंट एंड नंबर 4 पॉइंट आम लिखिदे पारिबा ओके द पीरियड ऑफ इन्फांसी इज आल्सो नोन एज द पीरियड ऑफ न्यूबॉर्न ये जो इन्फांसी पीरियड को आम न्यूबॉर्न भी कहि परिबा किंबा और द पीरियड ऑफ न्यूनेट ताको न्यूनेट स्टेज भी बोली आम कहि दे परिबा द ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड इज ओनली 2 वीक्स यार जो पीरियडटा थाए लाइफ स्पानटा इन्फांसी फास्ट स्टेज एवं तार लाइफ स्पानटा बा स्टेजटा केते दिन कंटिन्यू करे ओनली और 14 डेज और 2 वीक्स मात्र 2 वीक पर कंटिन्यू करे तापर से स्टेजटा कंप्लीट हो जाए ओके सो दिस पीरियड ऑफ इन्फांसी इज आल्सो नोन एज द पीरियड ऑफ न्यूबॉर्न ताको न्यूबॉर्न बोलिक भी कहि परिबा आउ न्यूनेट भी कहि परिबा एटी गोटे क्वेश्चन रे पड़े डेथ स्टेज इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूनेट आंसर हला हमर इन्फांसी ओके एंड द ड्यूरेशन टा होची केते ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ इन्फांसी इज डेज दिस इज ओनली 14 डेज ओके दिस इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंटल पीरियड ओके तो ये क्वेश्चन भी पिला आसे डेथ स्टेज ओके डेथ स्टेज इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ पोस्टनेंटल डेवलपमेंट आंसर सिंपली आम दे पारिबा दिस इज इन्फांसी पीरियड ओके एति जिनस बुझीगला तो यही जगह जेहेतु सी कहूँ एक्सप्लेन करने आउ किसी जिन आम आड कर फॉर 3 मार्क्स जदि 2 मार्क्स हुए देन यू हैव टू राइट एतिकी जिन तुमको लिखापी पड़ो किंतु जदि 3 मार्क हुए सेटा ताहले हमको आउ टिके जिन लिखापी पड़ो ये आम लिखा द इन्फांट यूजुअली रेस्पोंड टू द व्हाट पोस्टनेंटल एनवायरनमेंट with a very painful cry जेते बेले पिला माने आमे जानिजु आफ्टर कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड काटी सारला परे से गुटे न्यूबॉर्न बा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बेबी हे गला एवं से एनवायरनमेंट सहित जो लाइट टेम्परेचर हीट बुझेला एयर ई सब को एडजस्ट करिया पई से कोन करे ना यूजुअली बा साधारण हिसाब रे माने बहुत जोर पेनफुल क्राई करे कारण आगरु मा एनवायरनमेंट थिला वर्तमान एक्सटर्नल एनवायरनमेंट गुटे भिन्न टाइप रो एनवायरनमेंट से पाउची ओके तेणु करी से कौन करे बहुत जोर कांदिबा स्टार्ट करे ओके टू एडजस्ट विथ दिस सर्कमस्टांसेस और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ओके एंड कौन होउची ना इन्फांसी इज कंसीडर्ड टू बी ए प्लेट्यू इन डेवलपमेंट एटी क्वेश्चन आसिला डेथ स्टेज इज कंसीडर्ड एज द प्लेट्यू स्टेज आंसर हला इन्फांसी ओके किंबा इन्फांसी इज अदरवाइज नोन आज डेथ स्टेज ये आम कौन पहले 3-4टा जिन पाइले गोटे न्यूबॉर्न कहीपर आम किंबा न्यूनेट कहीदे पारिबा किंबा प्लेट्यू बोलिकी कहीदे पारिबा प्लेट्यू स्टेज बोली कहीपर ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेट्यू मीन्स देयर इज न्यू डेवलपमेंट और ओनली रेस्ट पीरियड ऑफ द एंटायर डेवलपमेंट कहीं जिनसा हुए आम से प्लेट्यू स्टेज जमी पढ़ा से आम जापर ओके तो ये जानी था प्लेट्यू स्टेज कह जाए इन्फांसी पीरियड को कहीं से ही स्टेज रे छुआटा जन्म होता है जन्म हवा पर एडजस्ट करने न्यू सर्कमस्टांसेस बा एनवायरनमेंट ताको किसी समय लगे ओके तेणु तार कौन ग्रोथ बा डेवलपमेंट हो पारे ना तेणु ताको कह जाए प्लेट्यू स्टेज ओके and infancy is considered with the plateau in the development which means a period of halt or no development halt माने गोटे जगह स्टॉप होगी रही जीवाटा ये जगह आउ कौन सी डेवलपमेंट होउनी ओके दिस प्लेट्यू or period of no growth and development is due to the necessary to make immediate adjustment to the new postnatal development जन्म हैला परे ताकू immediately new environment सहित adjust करिया पई पड़िबो तेणु सेठी कोनोसी प्रकार डेवलपमेंट हेई पारे नाही ओके देन क्वेश्चन नंबर 18 ओके तो यही क्वेश्चन नंबर से कहूँ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बेबीहुड रो कैरेक्टरिस्टिक गुड़ाक सब कौन कौन डिसाइड कर ओके तो आंसर आम कौन लिखा दिस इज द सेकेंड पीरियड ऑफ पोस्टनेंटल डेवलपमेंट नंबर 1 रे आसला दिस इज द सेकेंड पीरियड इन्फांसी पर आसला बेबीहुड तेणु यहाँ हूँ सेकेंड पीरियड the duration of this period ranging from the end of 2 weeks to the end of the 2 years means आमे जानी जो इन्फांसी टा 14 दिन तो कंटिन्यू कला एवं it is otherwise known as 14 days and it continues from the 14 days onward and till 2 years
ओके तो बेबीहुड स्टेजटा आमर आम जदि कहवा इट स्टार्ट फ्रॉम 14 days एंड कंटिन्यूज अप टू 2 years. ओके दिस इज द बेबीहुड स्टेज. ओके बुझेगा ये पॉइंट नंबर 2 एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड नंबर 3 पॉइंट आम कौन लिखिदे पारिबा ड्यूरिंग दिस पीरियड द बेबीज ग्रो वेरी रैपिडली with regard to their height, weight and body circumstances, with regard to their appearance, activities and behavior. Marked changes are also noticed in this in their experience. तो यही जिनस गुड़ा को आम मात्र 2 मार्क पाई एतिकी पर्यंत आम लिखिदे पारिबा. ओके फॉर 2 marks ये आम लिखिदे पारिबा कौन ना ड्यूरिंग दिस पीरियड यही टाइम रे बा ड्यूरिंग द बेबीहुड पीरियड द बेबीज ग्रो वेरी रैपिडली बहुत जोर बेबीटा ग्रो करे बा रैपिडली ग्रो करे विथ रिगार्ड टू को कॉन्टेक्स्ट रे इन देयर हाइट तार हाइट बहुत जोर ग्रो करिवो बहुत अधिक मात्रा रे ग्रो करिवो वेट मध्य ग्रो करिवो एंड बॉडी सर्कमस्टेंसेस बॉडी रो जतिकी जाको पार्ट सब अछंती सी भी बहुत जोर रे ग्रो करिवो. ओके एंड आउ कोन ना विथ रिगार्ड टू ओके अनदर थिंग विथ रिगार्ड टू देयर अपीयरेंस तार लुक भी चेंज हम एक्टिविटीज तार एक्टिविटीज भी ग्रोथ आसो एंड तार बिहेवियर मध्य चेंज आसो. ओके एंड मार्क्ड चेंजेस आर आल्सो नोटिस्ड इन देयर एक्सपीरियंस. तो ये जो तार एक्सपीरियंस करी करी जाउची सेठी हमें नोटिस भी करि परिबा विभिन्न प्रकार डेवलपमेंट प्रोसेस एंड ग्रोथ प्रोसेस इट में भी नोटिस्ड. ओके एतिकी जिनस हमको लिखि परिबा एंड एठी आउसी कोन कहूची ना यार गोटे कैरेक्टरिस्टिक होची ए हमर बेबीहुड स्टेज रो दिस एज इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी द एज ऑफ हेल्पलेसनेस. ओके हेल्पलेसनेस कहले कोन मीन्स विदाउट हेल्प ऑफ एनीबॉडी एल्स से कौन सी काम करि परिबो नाही जोटा कि हमें कंप्लीट डिपेंडेंट स्टेज बोली कहि दे परिबा. ओके because the baby has to depend on others for his or her survival for everything. सबु जिनस करिवा पई से जन को ऊपर कोन करिवो डिपेंड करिवो तेणु करी एटा को कुआ जाय स्टेज ऑफ हेल्पलेसनेस. ओके तो एटी क्वेश्चन रे आसिला शॉर्ट मार्क. ओके बेबीहुड इज आल्सो कंसीडर्ड एज डे स्टेज. तो एटी आंसर टा हमर आसीबो हेल्पलेसनेस स्टेज बोली कि हमें कहि परिबा. ओके एतिकी जिनस हमको लेखिबार अछि. देन कम्स टू नेक्स्ट वन डिस्कस द मेजर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड. ये नेक्स्ट स्टेज बेबीहुड पर आ गोटे आसिला चाइल्डहुड. ओके इन्फांसी आम पढ़िले तापर बेबीहुड गला आम देखा चाइल्डहुड स्टेज रे कौन होची ना सी कहूँ ड्यूरिंग द चाइल्डहुड पीरियड व्हाट हैपेंस फिजिकल डेवलपमेंट इज द मोस्ट रैपिडली विजिबल ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट डोमेन्स. तो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट डोमेन बा एरिया भीतर तो फिजिकल डेवलपमेंट कौन हुए ना मोस्ट रेडिली विजिबल आम आखिरी देखी पारिबा फिजिकल डेवलपमेंट. ओके नंबर 1 नंबर 2 रे पेरेंट्स नोटिस्ड हाइट एंड वेट एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ बोथ फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स. तो ये पेरेंट्स कौन करती ये जो आमर रही फिजिकल डेवलपमेंट आम जदि कहवा कहार ड्यूरिंग द चाइल्डहुड पीरियड ताहले पेरेंट्स नोटिस करि पारंती कोनटा ना हाइट को नोटिस करि पारंती आउ कौन वेट को भी नोटिस करि पारंती एज वेल एज ता संगे डेवलपमेंट ऑफ बोथ ओके फाइन मोटर्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल. ये जो मोटर स्किल आमर अच्छी बुझेगा कि नहीं आर्म मूवमेंट लेग मूवमेंट यही सब जिनस गुड़ाक को सी नोटिस करि पारंती ड्यूरिंग द व्हाट चाइल्डहुड पीरियड जदि आम फिजिकल डेवलपमेंट कथा कहवा. ओके सिंपली इट इज मोस्ट रेडिली विजिबल आम क्लीयरली आम जापर देखिपर पेरेंट्स भी नोटिस करें. ओके आउ कौन फिजिकाली जदि आम देखा बिटवीन बोथ फिजिकाली बिटवीन बर्थ एंड एज ऑफ 3 ए चाइल्ड टिपिकली डबल्स इन हाइट. तो बर्थ टू जदि करवा ओके बिटवीन बर्थ एंड एज ऑफ 3 एटा जन्म है आठ 3 वर्ष भितर आम कौन देखिपर ना सी कहूँ जे चाइल्ड वेट हाइटा जी थी ओके तार हाइटा डबल हो ड्यूरिंग 3 वर्ष भितर. ओके ये नंबर 1 एवं क्वाड्रप्लेट इन वेट एवं जी वेट होई भितर ओके बार्थ टाइम रे जी हो तार 4 गुणा हो तार कौनटा वेट. ओके बुझीगला फिजिकल डेवलपमेंट 3 गुणा हो जाऊँगी तार कौन ना तार हाइट. ओके डबल सॉरी नॉट ट्रिपल इट इज डबल. ओके डबल होची तार कौनटा हाइटा जन्म टाइम रे तार हाइट जी थी फॉर एग्जांपल एतिकी तार हाइट थिला ओके ड्यूरिंग द डबल ये कौन आमर बर्थडे टाइम
बा पीरियड ऑफ बार्थ तो एटा कौन हम यहाँ डबल हो ओके डबल इन 3 इयर्स 3 वर्ष भितर यहाँ इन केस ऑफ वेट जदि आम कह बार्थ पीरियड जी थी तार वेट तार मल्टीप्लिकेशन बाय 4 बुझीगला क्वाड्रुप्लेट्स माने है मल्टीप्लाइड बाय 4 4 गुणा बढ़ीज तार वेटा ओके देन नेक्स्ट हूँ बॉडी प्रपोर्शंस ऑल्सो शिफ्ट बॉडी जो प्रपोर्शनटा आम रोचे जमीक धीरे धीरे चेस्टा बढ़ुची ओके हाथ हैंड लेग सब धीरे धीरे कौन हो बढ़ुची तेणु कौन हुए ना प्रपोर्शनटा धीरे धीरे शिफ्ट हम सो दैट द इन्फांट हुज हेड accounts for almost 1/4 of the total body length becomes a toddler with a more balanced ये जो मुंडोटा आमर कौन हुए ना आगु आम जानी पिला माने ना जिते से बार्थ टाइम रे बा इनसाइड द मदर्स होम तार मुंडोटा बहुत बटे थाए तापर धीरे धीरे कौन हो प्रपोर्शनटा भी भेरी करे एवं मुंडोटा को एप्रोप्रिएट साइज को नहीं आसे ओके एंड एडल्ट लाइक बर्तमान धीरे धीरे मोर बालांस हो मुंडटा कौन हम ना धीरे धीरे साइज को प्रॉपर साइज को आसो ओके Despite these rapid physical changes, the typical 3-year-old has mastered many skills. या संगे संगे ये तो आम फिजिकल चेंज आम देखिले रैपिड फिजिकली चेंज होउची ता संगे संगे जने 3 वर्षर जितेबले हो जाऊँगी ओके सी कौन हो ना विभिन्न प्रकार स्किल रे मास्टर्ड हो जाऊँगी इनक्लूडिंग सिटिंग वॉकिंग ओके देन कम्स टू टॉयलेटिंग एंड यूजिंग ए स्पून स्पून व्यवहार भी करि परिबो ओके ऑल दीज आर different kinds of skills also developed during the what this is known as your babyhood period okay next comes to explain the major physical changes takes place during the adolescence period रे कौन सब major physical changes होउची देखिबा तो the period is accompanied by a number of changes related to physical mental social एंड इमोशनल डोमेन्स तो यहीटा जदि डोमेन बा अंचल हुए बा डेवलपमेंटल एरिया हुए ओके एरिया को आम डोमेन बोलिकी कहवा तो यही जो आमर देखुचु एडोलेसेंट स्टेज जोटा कि 13 नंबर एज रु स्टार्ट होकर कंटिन्यू करुच्ची 19 पर्यंत बा एंटायर टीन एज को कभर करुच्ची यही स्टेज रे कौन होउची ना सी कहूँ जे इन दिस पीरियड ए नंबर ऑफ चेंजेस we may find during this stage तारी भितर कौन अच्छी you may tell about the physical changes mental changes social and emotional changes आम ये देखी पारिबा ए डोमेन बा अंचल रे तार परिवर्तन आसीबो दिस फेज इज द ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड सिंपली एटा कौन होची चाइल्डहुड टू कोठी के जाउची दिस इज नोन एज एडोलेसेंस ओके एटा हला चाइल्डहुड स्टेज एटा को तेणु करी ट्रांजिशनल स्टेज बोली करी मध्य कुहा जाय ओके both the characteristic of an individual तो ये आउ गोटे जिनस कहूँ जे फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल फैक्टर आउ इंटरनल फैक्टर दीटा जाक फैक्टर एडोलेसेंस डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस भी करे ओके तार जो चेंजेस गुड़ाक हुए आमर एडोलेसेंस पीरियड रे तो एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर बोथ इन्फ्लुएंस इन एडोलेसेंस डेवलपमेंटल प्रोसेस ओके तो ये नेक्स्ट कहूँ कौन ना मेनी बायोलॉजिकल चेंजेस टेक्स एडोलेसेंट ईयर विभिन्न प्रकार बायोलॉजिकल परिवर्तन आम देखिपर ड्यूरिंग द एडोलेसेंट ईयर्स बा एडोलेसेंट पीरियड रे ओके एंड मोस्ट ऑब्वियस आर द फिजिकल चेंजेस फॉर एग्जांपल आउ आम से जो बायोलॉजिकल चेंजेस आम देखा सेटा साधारण हिसाब से जदि आम नबा फिजिकल चेंजेस जदि आम एग्जांपल देखा इंक्रीज इन हाइट एडोलेसेंट पीरियड रे हाइटा इनक्रीज होउची ओके एक्विजिशन ऑफ मसल मास आमर जो मसल अच्छी मांसपेशी अच्छी सेटा धीरे धीरे बढ़िबो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट एंड बॉडी फैटा भी बढ़िबो धीरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ता संगे संगे एडोलेसेंस पीरियड रे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मध्य एज ए बायोलॉजिकल डेवलपमेंट इट ऑकर्स ओके दीज आर सम मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और चेंजेस और फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द व्हाट एडोलेसेंट पीरियड ओके एति किछि लिखिबार नाही एति हमको लिखिबार अछि ओके for 3 marks or 2 marks then comes to next asila what are the characteristic of adolescence physical development ame देखि देले वर्तमान characteristic the 5 leading characteristic of the adolescent period are biological growth and development तो पहला होची biological growth और development
as underlying status increase. तो वर्तमान आम देखा ओके तो फास्ट कैरेक्टरिस्टिक रिगार्डिंग योर एडोलेसेंट पीरियड सी कहूँ पांचटा मेजर कैरेक्टरिस्टिक अच्छी गोटे हूँ बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नंबर वन ओके अनडिफाइंड स्टाटस एटा तो बुझी होची बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आम डिस्कस करूँ जोटा कि हाइट वेट एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होची एंड undefined status means during that period the adolescent has no any kind of status or identity जोटा कि आइडेंटिटी कन्फ्यूजन हुए एडोलेसेंट पीरियड रे मु किए ओके दिस इज ओके एक्जिस्टेंस सोसाइटी रे कौन अच्छी नेक्स्ट इनक्रीज डिसीजन मेकिंग तापर कौन कहूँ धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग क्वालिटी पलि आसे देन इनक्रीज प्रेशर ए टाइम रे प्रेशर भी इनक्रीज है एवं एंड द सर्च फॉर सेल्फ एटा जो आम कहूँ ये अनआइडेंटिफाइड स्टेटस जेहेतु तेणु से कौन करती सेल्फ को आइडेंटिफाई करने चेष्टा करती किए से आइडेंटिफाई करने चेष्टा करती एंड नेक्स्ट थिंग इन एडिशन टू ऑल दीज फाइव सम इम्पोर्टान्स आर ये पांचटा को छाड़देला किसी इम्पोर्टाट मेजर कैरेक्टरिस्टिक आम देखिपर एडोलेसेंट पीरियड गोटे हूँ एडोलेसेंट इज एन इम्पोर्टाट पीरियड ये है नंबर वन ये बहुत गुरुत्वपूर्ण पीरियड नंबर टू इट इज ए ट्रांजिशन पीरियड जोटा कि चाइल्डहुड टू एडोलेसेंट को जाऊँगी तेणु यहाँ गोटे ट्रांजिशनल पीरियड बोलिकी कहुए एडोलेसेंट इज ए पीरियड ऑफ चेंज ओके यहाँ परिवर्तन समय बा पीरियड बोलिकी आम कहीदे पार एडोलेसेंट इज इगोसेंट्रिक एंड प्रॉब्लम एज इगोसेंट्रिक इन द सेंस जहाँ भी चिंता करेंगे से करने को चेष्टा करेंगे मीन्स सेल्फ कनसेंट्रेटेड दिस इज इगो कनसेंट्रेटेड एंड प्रॉब्लम एज यही एज रे विभिन्न प्रॉब्लम से सम्मुखीन होता है नेक्स्ट नंबर 5 एडोलेसेंट इज सर्च फॉर आइडेंटिटी यहाँ आम देखुले सर्च फॉर आइडेंटिटी और सेल्फ ये जिनसा आम देखिले ओके दीज आर 5 एंड रिमेनिंग्स आर नंबर 6 एडोलेसेंट इज ए पीरियड ऑफ अनरियलिज्म एंड नेक्स्ट एडोलेसेंट पीरियड इज ए हीरो वर्शिप एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी हीरो वर्शिप कहले कौन से गोटे माने कामटे को से निजे हिसाब से करके देखापी चेष्टा करती मीन्स शो ऑफ क्वालिटी ओके हीरो वर्शिप देन सेक्सुअल मैच्योरिटी मीन्स sexually they are going to mature then adolescent is a period of intensely emotional जेहेतु ये विभिन्न प्रकार हार्मोनल चेंजेस हुए तेणु ये माने ड्यूरिंग adolescent period intensely emotion आम देखिपर ड्यूरिंग adolescent period okay due to hormonal changes then comes to adolescent is a period of sexual delinquency जेहेतु ये सेक्स हार्मोन से रिलीज हुए तेणु से विभिन्न प्रकार डेलिक्वेंसी बा विभिन्न प्रकार को व्हाट वी मे से दैट दिस इज व्हाट एंटी सोशल एक्टिविटीज सेक्सुअल एक्टिविटीज भितर भी निजको इन्वॉल्व कर दी पारंती ओके दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ सेक्सुअल डेलिक्वेंसी ओके and number 10 adolescent is a period of high moral values and sacrifice they always try to give some sacrification to their friends or colleagues or neighbors or anybody else okay these are some important characteristics during the adolescent period okay then number 22 explain the various mental changes takes place during ओल्ड एज रे जो मेंटल चेंजेस होउची से गुडाक लेख बोलिकी कहूँ तो सम ऑफ द मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल और मेंटल चेंजेस टेक्स ड्यूरिंग द ओल्ड एज आर कौन कौन अच्छी ता भितर ना मेंटल केसेस रे जदि आमे देखिबा मीन्स साइकोलॉजिकल तो साइकोलॉजिकल चेंजेस रे कौन कौन होउची वर्तमान आमे देखिबा नंबर 1 सॉरी जस्ट 1 मिनिट okay so the followings are the distinct characteristic of just a moment okay so dear students let's start again explain the various mental changes taking place during the old age means mental changes means what psychological changes during the old age period रे ये जो psychological बा mental changes सब कौन कौन हुए वर्तमान में लिखिबा some of the most common psychological or mental changes takes place
से जो मोस्ट कॉमन मीन्स साधारण भाव में जो साइकोलॉजिकल परिवर्तन गुड़ाक हुए से गुड़ाक कौन कौन अच्छी ड्यूरिंग द ओल्ड एज पीरियड स्लोयर रिएक्शन टाइम नंबर 1 स्लोयर रिएक्शन टाइम मीन्स ये जो कामटा से माने करती कौन भी मेंटल वर्क तांकर कामटा स्लो हो जाए रिएक्शन टाइम ओके देन डिक्रीज इन एटेंशन स्पान में मध्य डिक्रीज हुए आगु जो स्पान ऑफ एटेंशन टा थाए सेटा ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाए ओके रिड्यूस इन डिसीजन मेकिंग स्किल आमर आगु जिते से आडल्टहुड बा आडोलेसेंट पीरियड रे जिते थिला जेमितिया डिसीजन नहीं पारुथला से डिसीजन टा धीरे धीरे रिड्यूस हो जाए कमी जाए मेकिंग द डिसीजन स्किल ऑलरेडी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द ओल्ड एज देन लेस लाइकली टू डेवलप डिप्रेशन तांको पाखरे आउ डिप्रेशन देखा मिले ना बहुत कम मात्रा रे देखा जाए जोटा कि आम देखुचु आडोलेसेंट स्टेज रे डिप्रेशन टा अधिका थाए किंतु ओल्ड एज बेलू डिप्रेशन टा धीरे धीरे कमी जाए से डेवलप हुए ना देन नेक्स्ट वेरी कॉमनली यू नो दैट मेमोरी लॉस ओके देन लैक ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फेस एमाने आउ फेस को भी रिकॉग्नाइज करि पारंती नाही ओके रिस्क ऑफ हैविंग ए स्ट्रोक फॉर साइकोलॉजिकल थिंकिंग ओके तार माने होची या माने साइकोलॉजिकली से माने चिंता करी करी भी बेले बेले तांकर स्ट्रोक पळे आसे हार्ट चोक करी जाए ओके दीज आर सम important or major and common what characteristic of old age psychological changes then question what are the main characteristic of old age रो main characteristic सब कौन कौन अच्छी वर्तमान आम देखा आम तो psychological changes गुड़ाक देखिले वर्तमान तार characteristic देखी नवा ओके the followings are the distinct characteristic features of old age तो old age रो features गुड़ाक हला old age is a rapid period of rapid decline number 1 rapid decline means what एटा आगु बढ़ी थिला वर्तमान तळकु आसीबो जति जाक कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो बा फिजिकल डेवलपमेंट हो से कोन हबो धीरे धीरे डेक्लाइन हे जिवो ओके रैपिड डेक्लाइन हबो धीरे धीरे न बहुत जोर रे डेक्लाइन हे जिवो देन नंबर 2 like all other phases of life old age is also characterized by physical and mental changes नंबर 2 रे अन्य स्टेज रे जेमितिया साइकोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस होतला ए स्टेज रे मध्य फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होची ये नंबर 2 एंड नंबर 3 there is individual difference with regard to the effect of aging ये जो आम एजिंग बोलिकी कहूँ यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंस आउ एनवायरमेंटल डिफरेंस भी यही पारे फॉर एग्जांपल somebody are staying in very good environment and getting the nutrition then aging process will be late for him जदि जड़े भल एनवायरमेंट रोचे प्रॉपर न्यूट्रिशन पाई पारुची खाया ठीक टाइम रे खाऊची ताहले तार एजिंग प्रोसेसटा निहाती बहुत विलंब रे आसीबो आज कंपैरिजन टू हु आर नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स and as well as lack of proper environment okay then it varies means old age varies individual to individual it is another characteristic and number 4 okay number 4 old age is evaluated and interpreted from many different perspective आमे विभिन्न पर्सपेक्टिव रु ताको आमे इवैल्यूएट बा कोन करि परिबा ना इंटरप्रेट मते करि परिबा दिस इज नंबर 5 okay and number 6 old age is characterized by emotional social and other adjustment problem तो ड्यूरिंग ओल्ड एज रे विभिन्न प्रॉब्लम आमे देखि परिबा ता संगे संगे इमोशनल प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम एंड अदर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम मध्ये आमे देखि परिबा ड्यूरिंग द ओल्ड एज दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड एज ओके देन नेक्स्ट cognitive abilities are greatly affected during the old age amar jo cognitive activities means learning perception okay and then decision making all these cognitive aspects and abilities gradually decline during the old age or affected during the old age okay then comes to next one old age is also characterized by rapid memory loss एटा भी आमे पढुतले देखुतले जोटा कि हमर साइकोलॉजिकल व्हाट चेंजेस देखुतले मेमोरी लॉस टा होची रैपिडली एंड ओल्ड पीपल जनरली एक्सपीरियंस ए फीलिंग ऑफ लो सेल्फ एस्टीम ता ताकर धीरे धीरे कोन हुए लॉस हो जाए ओके एंड सोशल एटीट्यूड्स आर यूजुअली अनफेवरेबल टुवर्ड्स ओल्ड एज तो ये जो आमर गोटे सोसाइटी रो गोटे नेगेटिव थिंकिंग बा नेगेटिव एटीट्यूड अछि टुवर्ड्स द ओल्ड एजेड पीपल ओके this is called social attitudes are usually unfavorable which are not favorable to the old aged people okay then the desire to live long increases proportionally
with increase in age। এই যে বঞ্চিবার অভিলাষটা বা the desire to live long, বঞ্চিবার অভিলাষটা କ'ଣ ହୁଏ ବୁଢ଼ା ସମୟରେ ବଢ଼ିଯାଏ proportionately with increase in age। ବୟସଟା ଯେତିକି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ, this is the study, it is not haphazard, it is the study, and what developmental psychologists identified that by studying different kinds of researches, they found that as the old age is growing, their desire to live long also increase। ଯେତିକି ସେମାନେ ବୁଢ଼ା ହେଇ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଆଶା ବା ଅଭିଳାଷଟା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ। These are some important characteristics during the old age period। Okay, why old age is considered as the period of decline? So these are some important what characteristic ଆମେ discuss କଲେ, ତଥାପି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଯଦି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଡ଼େ why the old age is considered to be the what period of decline, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତିଆ ହିସାବରେ ଲେଖିବା old age is a period is considered as the period of decline because decline comes partly from the physical and partly from the psychological factors। ତ ସିଏ କହୁଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ what ଡେକ୍ଲାଇନ୍ ପିରିୟଡ଼ କହିପାରିବା କାରଣ ଏଇଠି ପାର୍ଟଲି ମାନେ କିଛି ଫିଜିକାଲ ଡେକ୍ଲାଇନ୍ ବି ହୁଏ ଏବଂ ଆଉ ପାର୍ଟରୁ କିଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡେକ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। Though there is cultural and environmental factors as well as individual factors has its own role in aging process, human declines in development after 60 years। যদিও ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କଲଚରାଲ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଯଦିଓ ହେଇପାରେ ଏଜିଂ ପ୍ରୋସେସରେ, ତଥାପି 60 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ମଣିଷର ଡେକ୍ଲାଇନ୍ ହେବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକାଲ ଡେକ୍ଲାଇନ୍, ଯଦି ଆମେ ଫିଜିକାଲ ଡେକ୍ଲାଇନ୍ର କଥା କହିବା, ସମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଓକେ ଓକେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡେକ୍ଲାଇନ୍ସରେ ଆମେ ଯେମିତି ପଢ଼ିଥିଲେ ସବୁ ଯାକ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍, ସେଇଗୁଡ଼ାକ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇପାରିବା। ଓକେ, then question number 25, what is cephallo-caudal sequence and proximo distal sequence? এইটা অলগা অলগা কোশ্চেন। ওকে, সো আই হ্যাভ প্রিপেয়ার্ড সেপারেটলি। তো পিলামানে এইটা কনফ্ୟୁজ হবার কিছু নাই, বুঝিବାକୁ চেষ্টা কর। ওকে, হোয়াট ইজ cephallo-caudal and what is proximo distal sequence in development pattern? ओके, तो आमर जो डेवलपमेंटल पैटर्न अच्छी दुई प्रकार पैटर्न आम देखिपर डेवलपमेंट प्रोसेस रे। ओके, ये मन रख डेवलपमेंटल पैटर्न इज ऑफ टू काइंड्स, गोटे है cephallo-caudal आ गोटे है proximo distal। ओके, cephallo-caudal मीन्स कौन ना आम ये बर्तमान देखी नवा बुझी नवा क्लीयरली। ओके, cephallo-caudal मीन्स हेड टू टो। ओके, cephallo-caudal मीन्स एटा है हेड, एटा है टो। ओके, हेड टू टो डेवलपमेंट जोटा होउची। ओके, दिस इज नोन एज cephallo-caudal sequence। बुझीला बे आज सच द cephallo-caudal sequence। ओके, as such the cephallo-caudal principle refers to the general pattern of development seen in the earliest year of the postnatal development, especially ranging from the infancy to toddlerhood, or it is known as childhood। Okay, means it is up to 36 months। এই cephallo-caudal sequence आमर इन्फान्सी पीरियड रु आरंभ होकर चाइल्डहुड जोटा कि टडलहुड बोलिक कह जाए से पर्यंत कंटिन्यू करे अप टू 36 मंथ्स माने 3 वर्ष पर्यंत। द cephallo-caudal प्रिंसिपल एप्लाइज ऑफ बोथ फिजिकल एंड फंक्शनल डेवलपमेंट। तो ये cephallo-caudal प्रिंसिपलटा दुईटा जाक माने फिजिकल फंक्शनल डेवलपमेंट रे भी एटा आमे देखि परिबा। ओके, दिस इज कॉल्ड cephallo-caudal। Then comes to next question, why it is said the developmental pattern is similar to all? एटा यदि क्वेश्चन पड़े आमर गोटे प्रिंसिपल अच्छे रेफर टू प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यही प्रिंसिपल भितर से क्वेश्चन टाक आम पाई परिबा। व्हाई इट इज सिमिलर टू ऑल मीन्स गोटे प्रिंसिपल अच्छे आमर डेवलपमेंट इज सिमिलर टू ऑल, इट इज वन इम्पोर्टाट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। से जिनटा को आम 2 मार्क लिखिदे पारिबा। ओके, सो यू मस्ट रेफर इट। देन 27, मेंशन एनी 3 इम्पोर्टाट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल आम पढ़ा से 3टा, तार भर जो 3टा तुमको भल लगे मन रखिपर से 3टा को तुम लिखिदे पार। देन 28, देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन हाउ। तो यहाँ भी गोटे प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट, तो सही टाइम से डिस्कस होता को तुम से जब क्वेश्चन पढ़ला तुम जस्ट
সেই তিনটাକୁ তুমি କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବ ଯେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ। ओके ड्यू टू जीन फैक्टर ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर दुईटा इंपोर्टेंट फैक्टर अच्छी से जोटा कि कम्प्लीटली आम डिस्कस करवा से आमर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके देन कम्स टू 29 व्हाट आर द चैलेंजेस एडोलेसेंस फेस। एडोलेसेंस को चैलेंज सब फेस करती आंसरटा है ह्यूमन लाइफ कंप्लीट्स इट्स जर्नी थ्रू वेरियस स्टेजेस वन ऑफ द मोस्ट भाइटाल स्टेज इज एडोलेसेंस। तो सी कहूँ जे जो मनुष्यर जर्नीटा विभिन्न स्टेज देकर गति करुच्ची एवं मोस्ट भाइटाल स्टेज बा इंपोर्टेंट स्टेजटा हूँ एडोलेसेंस and adolescence is the period of transition from the childhood to adulthood and plays a decisive role in the function in the formation of pro-social and anti-social adult। तो ये जो adolescent period टा जेहेतु transition period from childhood to adolescence what childhood to adolescence तेणु एटा गोटे decisive role play करे बा major role play करे जेटा pro social ही परिवो ना से adolescent टा जी जाउची से pro social means जी कि सोशल सहित खाप खुआई चली पार साथ आडजस्ट कर तार नॉर्म रेगुलेशन माने ताको नहीं बढ़ी पार। ओके ऑल दिस देन एंटी सोशल मीन्स एगेंस्ट द सोसाइटी। तो ये जो एडोलेसेंट पीरियडटा आमर अच्छी ये एडोलेसेंस पीरियड रे कौन हुए ना जने प्रो सोशल हो पार ना आंटी सोशल हो पार यही जिनटा जेहेतु डिटरमाइन करे ड्यूरिंग द एडोलेसेंस पीरियड देन दैट्स व्हाई दिस जर्नी इज वेरी क्रिटिकल स्टेज। ओके what adolescents face many challenges okay during this period। okay categorize तक जदि हमें करिबा ताहले बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव चैलेंज बोली कि हमें कहि देई परिबा। okay in biological challenges are the challenges that occur due to the release of sexual hormones that affect emotion। तो ये जो during the adolescent period जदि हमें physical what this is one kind of problem तो जेहेतु माने एक्सेस अमाउंट रो सेक्सुअल हार्मोन इंक्रीज हुए ड्यू टू मैच्योरिटी ऑफ द सेक्स तो एथरे कोन होउची ना से माने विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम मध्य फेस करंती ड्यूरिंग फॉर एग्जांपल इफेक्ट द इमोशंस। ओके नंबर 1 देन मूड चेंज इट इज अनदर इंपोर्टेंट गोटे हला हमर इमोशनल प्रॉब्लम 2 नंबर हला मूड इंक्रीज। ओके मूड चेंजेस कैन इंक्रीज व्हिच कैन इंपैक्ट ऑन द रिलेशनशिप बोथ with the parents and siblings and socially or school। तो जदि यही जो जिनसटा हुए मूड चेंज तो सी कौन करे रिलेशन टाक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए एमंग द पेरेंट्स सिबलिंग्स एंड सोशली और एट द स्कूल। ओके इन एडिशन टू दिट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ओके जोटा कि एसटीडी बोल कि आम कहूँ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ये गोटे प्रकार प्रॉब्लम। देन टीन ड्यूरिंग द टीन पीरियड ये प्रेगनेंसी होता एंड अनवांटेड चाइल्ड बियरिंग इच्छा नथिबो गोटे छुआटे जन्म करदेबे। ओके सो ड्यू टू व्हाट चाइल्ड मैरिज ऑल दीज आर वेरी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द एडोलेसेंट पीरियड। ओके देन यूथ सुसाइड मैक्सिमम हम देखिथिबो यूथ सुसाइड भी करी जानती बहुत युवक युवती सुसाइड कर नियंती ये गोटे प्रॉब्लम। देन डिप्रेशन ओके देन इमोशनल एक्साइटेशन ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस ओवर कॉन्फिडेंस ओके पर्सनल आइडेंटिटी and demand of independence sex role etc are very major challenges of this stage। okay बहुत गुड़े चैलेंज ये जगह आम देखी पारे these are the major challenges during the adolescent period। then question number 30 what are the challenges adulthood aged face। सी तो गला एडोलेसेंस रो कथा वर्तमान एडल्टहुड स्टेज रे को चैलेंजेस बा प्रॉब्लम से माने फेस करंती वर्तमान देखिबा। ओके 5 major struggles occur during the emergence of adulthood। adulthood period रे 5टा मेजर स्ट्रगल आम देखी पारिबा। नंबर 1 हला आइडेंटिटी नंबर 2 हला इंस्टेबिलिटी देन नंबर 3 हला बीइंग सेल्फ फोकस्ड एंड नंबर 4 दिस इज फीलिंग इन बिटवीन। ओके नंबर 4 एंड नंबर 5 न्यू पॉसिबिलिटीज all these are 5 major struggles। okay in addition to this following are some challenges adulthood face वर्तमान ई पांचटा को छाड़ी करी आउ किछि अछि सेटा को वर्तमान हमें देखिबा। okay early adulthood is a stage of both adjustment and preparation to meet personal and social expectation। तो ये जो फर्स्ट स्टेज टा
आमर आडल्टहुड एटा गोटे सोशियाली आम इनवल्व होती तेणु सोसाइटी आम पाखु किसी आशा करुच्ची एमे आम बर्तमान डिसाइड करवा मो कौन करी एंड सोसाइटी एक्सपेक्टेशन बा आशाटा को मुझे पूर्ण करी ओके इट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम नंबर 2 parenthood is usually achieved during this phase and with it there is a shift in role playing behavior तो वर्तमान कौन हुए आफ्टर ड्यूरिंग द adulthood period there is a social norms or rituals this is marriage कला परे जेतले से बापा बा माँ हो जाती वर्तमान ताकर रोल प्ले चेंज हो जाए ओके सडनली जेतु से बापा होती केमिति हिसाब रे एडजस्ट करेंगे दे कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड इट क्रिएट्स द चैलेंज अमंग देम ओके देन मोस्ट आडल्ट्स एक्सपीरियंस मैक्सिमम स्ट्रेस जदि आम देखा से भाया बहुत गुड़े फिजिकल प्रोब्लेम बा फाइनेंशियल प्रोब्लेम एमती सोशल प्रोब्लेम ओके मेरिटाल प्रोब्लेम एमती बहुत गुड़े प्रोब्लेम से माने कन्फेस करती ओके सो पहला से कहूँ दे एक्सपीरियंस मोस्ट स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी एट दिस स्टेज बिकज ऑफ वर्क ओवरलोड जिते कामटा एक्सेस हो जाए तेणुक से केसेस रे से स्ट्रेस टेंशन एंड एंजाइटी से फेस करती बा एक्सपीरियंस करती नंबर 4 द इंटरेस्ट पैटर्न ड्यूरिंग एडल्टहुड चेंजेस रिमार्केबली आज कंपेयर टू द एडोलेसेंट बिकॉज ऑफ इंक्रीज सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिजायर टू होल्ड ए पावरफुल स्टेटस इन द सोसाइटी तो यही जिनसटा कौन होची ना जदि हमें कंपेयर करबा एडोलेसेंस आ एडल्टहुड पीरियड रे तो ये जो इंटरेस्टटा थाए से परिवर्तन हो जाए कहीं ना सोसाइटी किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर करुची फैमिली किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर करुची ओके ड्यू टू से कौन हुए ना तांकर इंटरेस्टटा भी विभिन्न प्रकार परिवर्तन देखा जाए यहाँ हूँ गोटे मेजर प्रोब्लेम देन मेरिटाल एडजस्टमेंट जेहेतु मैरेज से माने कर दे था ड्यूरिंग द एडोलेसेंट पीरियड मेरिटाल एडजस्टमेंट यूजुअली कंज्यूम मोर टाइम ड्यूरिंग द एडल्टहुड एंड फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स ओके सो फॉर मेनी रीजन्स व्हिच आर मोस्ट साइकोलॉजिकल मिडिल एज इज कंसिडर्ड द stage of stress crisis and anticipated fear okay these are some important challenges during the adolescent period adulthood period okay next the last question what is proximo distal the proximo distal sequence is the tendency for more general functions of limbs and deep before more specific or fine motor skills तो पिला माने एटा तुम देखि थिबो जे सीए कहूची proximo distal means कोन ना जेते बेले सेंट्रल पार्ट रो हमरो डेवलपमेंट टा ओके जेते बेले एटा फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंट्रल पार्ट ओके दिस इज द सेंट्रल पार्ट रू जेते बेले पेरिफेरल पार्ट को डेवलपमेंट टा जाउची दिस इज नोन एज proximo distal sequence ओके बुझीगला एबे तो यही जगह कौन होची से कहूची ना द टेंडेंसी फॉर मोर जनरल फंक्शन ऑफ लिम्स माने समाने कौन करती बॉडीटा को एका संगे मूव करती आज कंपेरिजन टू स्पेसिफिक ऑर्गन और स्पेसिफिक पार्ट्स मूवमेंट अलग पार्ट मूवमेंट करने पूर्वर से बॉडी को होल हिसाब रे मूव करती जोटा कि आम कौन कह proximo distal ओके इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड proxim व्हिच मीन्स क्लोज ओके यही वर्डटा आमर लैटिन वर्ड proxim रु आछि जार माने हला क्लोज एंड डिस मीनिंग अवे फ्रॉम ओके बिकॉज द ट्रेंड एसेंशियली डिस्क्राइब्स ए पाथ फ्रॉम द सर्टेन सेंटर आउटवर्ड्स मीन्स सेंट्रल पार्ट टू पेरिफेरल पार्ट को जो डेवलपमेंट जाए ताको हमें proximo distal बोल के कहबा इट मीन्स इंक्रीज ऑफ proximo distal sequence द डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट टू पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी ओके फॉर एग्जांपल जदि हमें कहबा स्पाइनल कॉर्ड ग्रोज फास्ट एंड डेवलप फास्ट इन प्रीनेटाल डेवलपमेंट ओके तापर पेरिफेरल पार्टा गोटे पहला हूँ स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट कला तापर पेरिफेरल पार्ट गुड़ाक डेवलपमेंट हुए इन प्रीनेटाल डेवलपमेंट स्टेज दैट्स व्हाई इट इज अनदर व्हाट पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट ओके सो डियर स्टूडेंट्स thank you for watching and wait for next video. Until have a good night. Okay, thank you.